Now going back to the discussion that we were doing. So this was the, sorry, delete this page. Now how can I delete this page? I should go here and delete it. Okay. Fine. So this discussion that we were doing, okay, over here, this particular language, L1 say, okay, and we refer to this language as say L2. L2. This is where in L2 I'm counting all the odd number of F counts or flip counts. And here I'm counting all the even number of flip counts. L1 and L2 are non-overlapping sets. And if I actually join L1 and L2, I'll get the original set L, which is set of all the number of flips, right? Okay. This particular thing that we have drawn over here, since we have double circled on state, this represents only this set. It doesn't represent this set. Okay. If I had drawn this in a different manner, where I have I might have double circled the off state instead of on state, then it would represent this language. And if I had double circled both the states, it will represent this language. I hope this is clear to you what we are trying to do in this particular kind of setting, problem setting. Just remove unnecessary things. Now we'll read the slide. ये तो मैंने स्लाइड को यूज किया मुझे जो पॉइंट फर्दर करना था उसके लिए. So हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा what is set, how I use set to represent alphabet of symbols. Then from alphabet of symbols, how do I construct a string? By doing concatenation of multiple symbols using the dot operator. Okay. Here we do not represent the dot operator, but that is implicitly there. FFF में लिखता हूँ तो वो actually क्या होता है? F dot F dot F. That is, I select F 3 times from the set. Okay. What will be the alphabet for this particular set? The alphabet for this particular set would be sigma is going to be F. Okay. Single symbol is there, F. Okay. मैं curly brace ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट. ओके, एक साइड का कर्ली ब्रेस मुझे आ रहा है, एक साइड का नहीं आ रहा है. दैट्स बिकॉज आई एम यूजिंग माउस नॉट टच स्क्रीन. शुड हैव यूज्ड टच स्क्रीन. दैट इज अ गुड आइडिया. नेक्स्ट टाइम आई विल सी do it through mobile phone maybe. Let it be. This is an example of deterministic finite automata over alphabet F. Okay, the answer that we are going to get, because I have double circled this, is F raised to n, where, so colon का मतलब set theory में होता है where, or it is like a predicate that we are defining. हमने या list comprehension देखा है दोनों क्लास के लिए. DSE में भी list comprehension हो चुका है Haskell में, और यहाँ नॉर्मल FE2 AC के लिए भी हमने list comprehension देखा था. तो इसका मतलब होता है such that. So we are actually writing a condition, n is odd, on the expression that we have over here. So left hand side is an expression, right hand side is set of conditions or constraints that we add to that expression, right? So that is set builder method or set notation. This is listing of out element, this is listing out the property. So I'm listing out property here to represent the set. Okay, ultimately both represent same thing. I hope now this is clear. Now this graphical representation is clear to you. It's a graph of nodes and edges, composed of nodes and edges, which is a directed graph. The directions show from which state you transit to which state. The labels show what is the input on which you do the transition. Okay, the starting state is always the state in which the system is or the computation is, and the ending or the arrowhead state is the state in which you transit into on that particular input, right? Then the next thing that we can understand from this diagram is there are certain nodes which I have double circled, which are the nodes which I interest to capture. Okay, these are the nodes which are of my interest, which I want to capture. So if I wanted to know when the bulb was on, I would make the on state double circle to identify when in the system I reach this particular state. These states generally are referred to as final और accept state. ये states को final state बोला जाता है या accept state बोला जाता है. These are referred to as final or accept states.
Okay, these are referred to as final or except states. Okay, now with this understanding, we will go ahead and we'll try to understand how we define a finite automata. How much time is left? 10 minutes are left. So do I have time for this? What do I have in the slides? Okay, I'll just show you this slide and then we'll go back. Okay. This is some board work from previous year. इसलिए आपको कुछ चीजें पहले से ही दिख रही है. I have retained the board work so that it is more understandable. Right? So as we were looking at finite automata, okay, इसको finite automata क्यों बोला जाता है? Actually, I forgot to tell you that. इसके लिए सब ये किया था, मेहनत किया था और आपको पार्टीशन के बारे में बोला था. तो पार्टीशन जो हम लोग बोल रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है कि ये दो स्टेट जो है, ये स्टेट में जब आप आओगे तो आप L1 लैंग्वेज को यानी L1 सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड व्हेन यू आर इनटू दिस स्टेट यू आर रिप्रेजेंटिंग L2, राइट? सो दैट मीन्स आई एम डिवाइडिंग द एंटायर computation into two partitions or two states. ये टू स्टेट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ. ये टू नंबर जो है ये फाइनाइट है ना. द नंबर ऑफ स्टेट्स इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, state transition diagram, or this particular device I should say. So this diagram is actually representing a device in operation. ये जो डायग्राम है ट्रांजिशन डायग्राम है ना, तो ये ऑपरेशंस को डिफाइन कर रहा है किसका? एक डिवाइस का, जिस डिवाइस में कैपेबिलिटी है टू रिमेंबर द स्टेट्स ऑफ ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटेशन. एक कंप्यूटेशन में स्टेट्स को रिमेंबर करने की कैपेबिलिटी है ये डिवाइस में. Okay, and how many states this particular device is remembering? This particular device is remembering two states. One is off and the other one is on. Okay, and he is giving more importance to on state because it has to remember when I reached on, because that is what is referred to as a valid string, right? So this device is called as finite because it remembers finite number of states. Now come into the through the other view. अगर states finite है किसी computation के लिए तो मैं ग्राफ बना सकता हूँ. अगर state finite नहीं होंगे तो मैं ग्राफ बना सकता हूँ क्या? नहीं, because I will be not able to enlist all the states in the graph. ना ग्राफ में मैं सब states दिखा पाऊंगा? नहीं दिखा पाऊंगा अगर state infinite है. तो state transition diagram मैं तभी निकाल सकता हूँ जब मेरा ग्राफ फाइनाइट है, यानी जब मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है. तो फाइनाइट ऑटोमेटा को फाइनाइट ऑटोमेटा कहा जाता है क्योंकि उसमें फाइनाइट नोड्स होते हैं, फाइनाइट स्टेट्स होते हैं, और स्टेट करस्पॉन्ड टू सर्टेन सबसेट ऑफ all the kinds of inputs that can come to the system. All the kinds of input that come to the system are epsilon, single f, 2f's, 3f's, 4f's, up to infinity. What are valid inputs out of those? Only those which takes you to state on. Okay, so the device should remember on and off both states. क्या both state उसको remember होगा तो ही उसको transition diagram देख के पता चलेगा कि transitions कैसे हो रहे हैं. Okay, so that's why this particular device is referred to as a finite device, because it has finite number of states. And why it is having the states? The states are used to remember what is going to come as input. Okay, I hope this is clear to everybody why this particular device is referred to as finite and what exactly is meant by a transition diagram. These are the two things that we learned. And what finite automata is doing? Finite automata is actually trying to partition all the incoming strings into, if this string is input, you will go to this state. If this string is input, you will go to this state. If this other string comes, you will go to another state. So what all inputs are coming to your device? You are segregating them into a partition, and that partition is represented using a state label. Okay, ये view बहुत important है समझने के लिए. थोड़ा difficult जा सकता है जिनके लिए ये बहुत नया है. Since I am teaching this so many times, I may feel that okay, this is easier to understand, right? Okay, but what we are actually doing, we are actually talking about a device. That device has certain finite count of states. In this case, the finite count of state is 2. This device has 2 states.
Now, whenever I give an input to this particular machine, this input is going to take me either to one of those two states. Either it will take me to on or it will take me to off state whenever I give an input, right? So that particular input string, so अगर मेरे पास input string है f f f f f 7 times, okay, 6 time बोला लेकिन 7 time x मेरे पास input है. So using this transition diagram, I know that if I have 7 number of jumps on this graph, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ultimately I will be in this state and this will be valid input. This is the way this device works. This will say that, okay, 7 time f आया, ultimately 7 time f आने के बाद you will be in on state. ये device ये बोलेगा. अगर on state है, यानी the bulb will glow. That is what I was interested in knowing. अगर 7 time मैं flip करूँ तो क्या होगा? That was my question. अगर मैं 10 टाइम फ्लिप करूं तो क्या होगा? ये अगर मेरा क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन मैं पोज कैसे करूंगा ये डिवाइस के लिए? मैं 10 टाइम f को लिखूंगा, f f f f 10 times. So my input will be f to the power 10. I will concatenate f 10 times to produce a string that represents an input flipping 10 times the switch. Okay, this is called as encoding your input into the one which can be given to the device. हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी तो यही करते हैं, सिर्फ वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा इनपुट इंग्लिश में होता है क्योंकि हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हैं. ओके, now I give this f10 input to f raised to 10 input to my device. What device would do? Device will simulate the transition diagram or transition model. It's a transition, na? It's changing. It's a dynamic diagram. Okay, first f it will come here, second f, third f, fourth f, fifth f, sixth f, seventh f, 8th, 9th and 10th. So device says you will land up in off state. Bulb will not glow. That is what you will understand. Okay, what was the question? I wanted to know अगर मैं 10 बार flip करूं बल्ब ग्लो होगा नहीं होगा? क्या आंसर मिला मुझे? बल्ब ग्लो नहीं होगा. So what the system has done? System has kept you in an off state. Off state is a non-final state or non-accept state. ये word मैंने पूरा नहीं लिखा था, but ये word है accept. A-C-C-E-P-T, accept. Okay, so this state is final or accept state. This state is non-final or non-accept state. तो F10 को मेरे सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी F10 को मेरे सिस्टम ने मेरा जो वैलिड पार्टीशन था या एक्सेप्टेबल पार्टीशन था उसमें नहीं डाला. उसने किस में डाला? उसको L1 सेट में डाला. L1 सेट क्या है? ऐसा सेट है जहां पे बल्ब ग्लो नहीं होता, यानी मैं रिजेक्ट करता हूं इनपुट को. So what these devices are doing, the finite automatas are either accepting the input or they are rejecting or not accepting the input. Okay, acceptance and rejection. This is what this device is doing. I told you already, these devices are called as acceptors. Okay, अगर याद होगा मैंने कहा था हम लोग दो चीजें सीखेंगे, एक तो होंगे डिवाइसेस और ऑटोमेटास. 3 kinds of automatas: finite automata, push down automata, Turing machines. And all these devices except for Turing machine, they work as acceptor device. That is, they will tell you whether the input is a valid input or an input is not valid input. These acceptor device. So this is the way these devices work. You provide the input string is simulated, we find out whether the state in which we land up in after simulating the input, is it a final state or not? Is it an accept state or not? If it is not an accept state, device says that the input is into a partition which is non-acceptable partition and I reject the input. Or if I reach a final state, then I say that, okay, this is the final state, means the input is valid, the input is acceptable from the point of view of the computation that I am representing using this particular device. Okay, I hope this idea is seeping into your mind and you are trying to assimilate this idea कि ये device कैसे काम कर रहे हैं, right? Anybody who has a query or doubt about whatever is being discussed so far, please raise your hands. Otherwise, you can simultaneously put things into chat window.
Yeah, your surname first, name, and then mother's name and your roll number for your attendance purpose. Okay, anybody has any query, please raise your hand or unmute and feel free to ask. जो हमने डिस्कस किया है वो डिफिकल्ट है ग्रास्प करने के लिए फर्स्ट टाइम, लेकिन आप अगर रिविजिट करोगे ये लेक्चर को तो आपको जरूर समझ में आएगा कि ये डिस्कशन क्या हो रहा है. Okay, I hope you have understood the idea of partition set. Partition set is a set of subsets of a set, okay, which can be obtained by uniting those subsets, and the subsets are non-overlapping. That is, their intersection between each other is always pi. So this is another Greek letter that I have introduced to you called as pi. This represents null set. This is representing null set. Null set. Set with no elements. Set with no elements. Okay, we have got another thing. So कितने ग्रीक लेटर हमने आज देखे? एक ग्रीक लेटर देखा कैपिटल सिग्मा, दूसरा ग्रीक लेटर देखा हमने एप्सिलॉन, दैट इज स्मॉल केस एप्सिलॉन. ई की तरह होता है, यहाँ पे डैश होता है, छोटा रहता है, वो स्मॉल केस में रहता है. एंड दिस पाई. ओके, इसके बाद हम लोग कैपिटल डेल्टा देखेंगे, लैम्डा देखेंगे, okay, और बहुत सारे देखेंगे. जैसे जैसे ये थ्योरी आगे बढ़ेगा यू विल कम टू नो लॉट ऑफ ग्रीक लेटर्स. ठीक है, मैथमेटिक्स में ग्रीक लेटर बहुत बार यूज होते हैं. ओके, इसीलिए कभी कभी लोगों को मैथमेटिक्स ग्रीक लगता है, लैटिन लगता है, बट दैट्स अ जोक. बट इट इज अ वेरी गुड साइंस. मैथमेटिक्स इज अ वेरी गुड साइंस. इट्स अ रूल बेस्ड थिंग. अगर आप ट्रेडिशनली रूल फॉलो करना पसंद करते हो तो आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा. इफ यू टेक एग्जाम्पल्स एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स आर वेरी इजी. ये अगर डायग्राम आपके दिमाग में बैठ गया तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉपर्टीज दैट मेक्स अ set of subset a partition. Okay, so best of luck for the next lecture. Happy Sankranti to all. We did not do it earlier because people were not in there in the meet. So enjoy the festivities, enjoy the lectures as well simultaneously. सर Yes. थँक यू सर. Yeah. सर याचं नोट्स काय काय? नोट्स वगैरे याचे अच्छा, आता मी जे शिकवतो त्याचं मी शेअर करीन ना, जरा थोडंसं कन्सिडरेबल मटेरियल होऊ दे, मग मी नोट्स शेअर करेन. लगेच नोट्स नाही शेअर करत. बिकॉज Because सर if बुक्स मध्ये हार्ड लँग्वेज असेल ना. बुक्स मध्ये सोपी लँग्वेज आहे, कुठलंही टेक्स्टबुक यूज करायच्यासाठी. या सब्जेक्टसाठी देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी टेक्स्टबुक. कुठलंही लोकल ऑथरचा टेक्स्टबुक घेतलं तरी चालेल. तुम्हाला जी लँग्वेज पचनी पडते ती लँग्वेज वापरून यूज करा. आता आपण जे कव्हर केलेले कन्सेप्ट आहेत ते कन्सेप्ट तुम्हाला कुठल्याही बुक मधनं समजतील, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, सो आय विल बी प्रोव्हाइडिंग सम नोट्स, बट थोडंसं कव्हर होऊ दे कन्सिडरेबल अमाऊंट, मग मी प्रोव्हाइड करेन. बी ग्रॅज्युअली शेअरिंग सम नोट्स. आणि या नोट्समध्ये फक्त डेफिनेशन्स वगैरे या गोष्टी असतील. बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या अनालिटिकल आहेत, त्या स्वतः करायच्या आहेत. सो आपण आता हे जे डिव्हाइस शिकणार आहोत ते डिव्हाइस आपल्याला बनवायचे आहेत, छोटे छोटे पझल्स सारखे. ओके, सो त्याच्यासाठी नोट्स सच नाही आहेत. ते डिव्हाइस बनवायला शिकायचं आहे. आणि तो डिव्हाइसची डेफिनेशन काय असते. फॉर इन्स्टन्स दिस इज द डेफिनेशन. या स्लाइड ज्या आहेत त्या स्लाइड मी शेअर करणारच आहे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिव्हाइस. नोट्समध्ये ही डेफिनेशन तुम्हाला दिली जाईल, पण ही डेफिनेशन ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस कशी करायची हे आपल्याला शिकायचं आहे आणि ते तुम्हाला अनालिटिकली स्वतःलाच करायचं आहे. ओके, सो विल ग्रॅज्युअली लर्न. डोंट वरी, डोंट टेक टेन्शन. सोपं आहे सगळं. मॅथमॅटिकल असलं तरी हे मॅथमॅटिक्स खूप सोपं मॅथमॅटिक्स आहे. त्याला डिस्क्रीट मॅथमॅटिक्स म्हणतात. सेट थिअरी आहे सगळी. ओके, फक्त थोडं तुम्हाला सेट थिअरी रिवाइज व्हायला पाहिजे. हे आपलं रिव्हिजनच चाललंय अजून सेट थिअरीचं. आपण आज पार्टिशन शिकलो, उद्या जाऊन आपण मॅपिंग शिकणार आहोत. फंक्शन काय असतं, रिलेशन काय असतं, क्रॉस प्रोडक्ट काय असतं. वी आर लर्निंग थिंग्स. ओके, सबसेट काय असतो, एलिमेंट काय असतं, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न. व्हॉट डू यू मीन बाय टपल. ओके, what it means by a tuple data structure, हे सगळं आपण शिकणार आहोत. Okay, so don't worry about it, don't think much about it.